Good morning, all of you. So today we are going to start our chapter chemical reactions and equations. What are chemical reactions? The definition of chemical reaction can be like it is a process in which new substances with new properties are formed from one or more substances. Clear? So एक ऐसी chemical process जिसमें नए substance बनते हैं और उनकी properties different होती है, नई होती है और वो फॉर्म होते हैं किसी एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस के साथ. तो दैट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. Now, the next thing is in a chemical reaction there are two things very important. One is your reactant and another one is your product. For example, in this magnesium plus oxygen combined to form MgO. So clear. So here Mg plus O2 are written on the left side. So these are called reactants, and the MgO so formed on the right hand side of the arrow is called the product. So these are the main important two things. One is reactant, another one is product. Now let's come back to the first page of the chapter. So there are chemical reactions which we can see in day to day life. One is milk is left at room temperature during summer. So what will happen if milk is left at room temperature during summer? So milk will get acidic in nature, or milk will get coagulated. Clear? So this is the chemical reaction. Another reaction is an iron pan or nail is left exposed to humid atmosphere. So what will happen in this case? In this case, rusting of iron will take place, which is again a chemical reaction because a new type of chemical compound is forming here. Here the rust is your Fe3O4.xH2. This is the formula of rust. Now grapes are fermented. Fermentation is also a chemical processes. Basically wines are formed during this process, fermentation of grapes. जो हमें product मिलता है, that is our wine. Foods get digested in our body. सो हम लोग इतना खाना वाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर केमिकल्स हैं. दैट केमिकल्स हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट आवर फूड एंड ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस. रेस्पिरेशन इज अगेन अ chemical process which we will discuss आफ्टर सम टाइम. सो एक्टिविटी 1.1 अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें समझाया गया है इस एक्टिविटी के दौरान कि व्हाट डू यू मीन बाय अ केमिकल चेंज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल चेंज. तो इन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ मैग्नीशियम रिबन, you have to cut into small pieces and pick it with the help of tong. So this is your tong. What we have to do is we have to take magnesium ribbon and take it closer to the Bunsen burner with blue flame. So what happen after the some time, you will observe a white dazzling flame comes out due to the burning of magnesium. So magnesium ribbon burn होता है और burn होने पे it will give dazzling flame, white dazzling flame, और कुछ पाउडर्ड लाइक ऑफ सब्सटेंस में वो कन्वर्ट हो जाता है. यानी मैग्नीशियम रिबन्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, जो अभी हमने लास्ट में रिएक्शन देखी थी, यानी ये वाली जो रिएक्शन है Mg प्लस O2 प्लस MgO. सो ये रिएक्शन होगी. यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो मैग्नीशियम का जो इनिशियल कलर था दैट इज़ ग्रेइश. ऑक्सीजन वी हैव यूज दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर एटमोसफियर, and the magnesium oxide that is forming is a compound that is white in color. So that is white in color. So a chemical, यहाँ पर अगर इस एक्टिविटी से अगर हम कुछ ऑब्जर्वेशंस लें तो दैट ऑब्जर्वेशन शुड बी दैट द color change of the substance taken place. Initially the color of magnesium is gray, but now the color of the compound formed, the product is white. Next activity 1.2 अगर हम समझें तो that activity is take lead nitrate. What is the formula of lead nitrate? Lead nitrate formula is PbNO3 का whole twice. That PbNO3 का whole twice we have to take in a test tube, and if we are reacting it with potassium iodide, what will it form? It will give lead iodide plus potassium nitrate. I will do all the reaction. I will give you all the reactions after this lecture. We will discuss it on the group also. So lead nitrate reacting with potassium iodide forms lead iodide plus potassium nitrate. Here the products are lead iodide and potassium nitrate. So lead iodide is yellow in color. So again, observation is this: whenever a chemical change occurs, there is a chance of change in color. So that is another activity
showing us that the chemical reaction take place. How can we observe that? By changing in color. Again, the next activity here is the zinc granules in a conical flask or a test tube reacting and add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this. Handle the acid with care. Yes, class, listen, you have to take care while using acid because they are highly corrosive in nature. Whether it is dilute or concentrated, you must take care while using it. Now, zinc granule हम क्या करेंगे? We will take a test tube. We will add one piece of zinc granule and add dilute HCl or concentrated or dilute HCl or concentrated sulfuric acid or dilute H2SO4 by its wall. So what will happen? You will observe a certain kind of bubbles are forming and zinc starts converted into another substance. Zinc gets corroded due to the corrosive nature of HCl or H2SO4 and a gas is releasing. That gas is your hydrogen gas. So zinc plus HCl gives you ZnCl2 plus hydrogen gas is liberating. Now that gas can be, how can we check that gas is coming out? So यहाँ पर that is one thing is that bubbling of H2 is coming out. Secondly, how can we check? We can take a matchstick. We take a burning matchstick near the test tube where the hydrogen gas is liberating. What will happen? It will burn with a pop-up sound. You will observe a pop-up sound of thing near the test tube when we are taking it closer to the, when we are taking burning matchstick near to the test tube in which this reaction is occurring. So it is a very important test while for checking the hydrogen gas because it burns with a pop-up sound. Clear? So these are the following activities which we have discussed. Now from the above three activities we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has change in state, यानी कि state में change आना. क्लियर? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्टेट में चेंज आया यहाँ पर, अगर हम बात करें तो इनिशियली जो मैग्नीशियम था वो हार्ड था काफ़ी ज़्यादा और उसकी स्टेट में हल्का सा चेंज आ गया, किसमें? वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, सॉफ्ट हो गया काफ़ी. क्लियर? चेंज इन कलर वी हैव सीन, जो लेड नाइट्रेट था, लेड नाइट्रेट इज़ कन्वर्टेड इनटू लेड आयोडाइड विच इज़ अगेन येलो इन कलर. चेंज इन कलर ऑब्जर्व्ड. इवोल्यूशन ऑफ गैस यहाँ पे हुई है. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जिंक हमने रिएक्ट किया विद H2SO4, द जिंक गेट्स द हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन. तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई. क्लियर है? सो दीज आर द फॉलोइंग चेंजेस. अगेन द चेंज इन टेम्परेचर. देर आर सर्टेन रिएक्शन इन विच टेम्परेचर चेंज ऑल्सो अकर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जो हमने जिंक और प्लस HCl और HCl का जो रिएक्शन किया है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन व्हाट हैपन्स, द टेस्ट ट्यूब स्टार्ट्स गेटिंग वार्म. सो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. अगेन अगला एक रिएक्शन देखें तो जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमने रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी क्या होता है? टेम्परेचर में चेंज आता है, यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? एनर्जी रिलीज़ होती है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा ऐसे केस में. नाउ नेक्स्ट वी गो विद द केमिकल इक्वेशंस. जैसे हमने बात की केमिकल इक्वेशंस को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशंस. जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे इन्होंने हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा NCERT में लिखा हुआ है. व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड. नाउ दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन सेंटेंस इज़ क्वाइट लॉन्ग. तो अगर हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखनी है तो उसको इतना बड़ा समझाने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन सिंपली राइट मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो जो लेफ़्ट साइड में है वो रिएक्टेंट्स हैं और जो राइट साइड में है वो प्रोडक्ट्स हैं. क्या इससे भी कोई शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, वी नो द फार्मूला और वी नो द सिंबल ऑफ दीज केमिकल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. मैग्नीशियम इज रिप्रेजेंटेड एज Mg, ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड एज O2 and magnesium oxide is MgO. Clear? So the formula making we have studied in 9th class. We will discuss it again because it is very vital. Writing a chemical equation.